लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Hi friends, welcome back to our channel PGMC by Unique Foundation। आज हम आपके सामने क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन समझाने आए हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो सब आज इस वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी हेल्पफुल in this chapter because the first topic in this chapter is distance formula, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट सेक्शन फार्मूला, ये भी आप 10th क्लास में पढ़ा। उसके बाद आता है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 vertices of the triangle are known to us। तो one by one let's discuss। All of you know how to find the distance x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula, right? Next is section formula. X is equal to mx2 plus mx1 divided by m plus n, and y is equal to my2 plus my1 divided by m plus n. This section formula is for the internal division. What is the meaning of internal division? When the point of division lies between the given points. Here point P lies between A and B, so P divides AB internally whenever the point of division lies between the line. For the external division, formula is same, only plus is replaced by the minus sign like this, and y is equal to my2 minus my1 divided by m minus n. External division means point of division lies outside the given point. It may be on the right hand side of B or it may be on the left hand side of B. So whenever external division is there, always use the minus signs in place of the plus sign. उसके बाद आपने पढ़ा था 10th क्लास में centroid. The symbol of the centroid is G, and centroid, the another name of the centroid is point of intersection of medians. Point of intersection of the medians is called the centroid, and the formula of the centroid is x1 plus x2 plus x3 by 3, and y is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the centroid of a triangle. अब देखिए distance between 2 points A and B। अब ये चीज तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि how to find the distance between 2 points A and B, but when AP parallel to x-axis, what is the distance when the line is parallel to x-axis? Like this. This is A, this is B. The coordinates are x1, y1. Coordinates are x2, y2. So distance is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. But when the line AB is parallel to x-axis, it means y1 and y2 are same. Why y1 and y2 are same? As per the definition of the parallel lines, the distance between them remains always same, so it will become root of
x2 minus x1 whole square, because y1 is equal to y2. And now this is the very important term for this. Earlier you have studied square and root get cancelled. That concept is not exactly true. That concept is not exactly true. The thing is, if you will cancel square and the root, it will become x2 minus x1. But if x2 and if x1 is greater than x2, then it will become negative. So put a sign of the modulus. This is the main important thing. This is the most important point. D is x2 minus x1, and the part second is when AB parallel to y-axis, then the distance is modulus of y2 minus y1. ये जो इतना टॉपिक है, ये 10th बेस्ड टॉपिक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. After that, centroid of the triangle. What is the distance between 2 points? When the line joining these 2 points is parallel to x-axis, is parallel to y-axis. Now there is a very important question. What will be the coordinates of an equilateral triangle? What will be the coordinates of an equilateral triangle under the different conditions? Here I am explaining 2 examples by which you can find the vertices of equilateral triangle. Suppose that the first thing is find the coordinates of an equilateral triangle whose side is 2a. Find the coordinates of an equilateral triangle whose sides are 2a such that base lies on x-axis. Base lies on x-axis such that origin is the midpoint of the base. So triangle is like this, origin is the midpoint. So this total side is 2a. That means this is a, this is a, this is 2a, this is 2a. Let this point is a, this point is b, this point is c. अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, find the coordinates of the triangle. As from the figure, the coordinates of point C are a, 0. Coordinates of point B are minus a, 0. Now how to find the coordinates of A? The x coordinate of A is 0. But what will be the y coordinate of A? So with the help of the Pythagoras theorem, we can find it. OA square plus OC square is AC square. OA, we have to find OA, OC is A, this is 2A square. So OA square is 3A square, so OA is root 3A. So this is root 3A. In this way, you can find the coordinates of an equilateral triangle. अब देखिए, ट्राइंगल नीचे भी तो आ सकता है, क्योंकि आपको ऐसा गिवन नहीं है कि ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स ऊपर है. ये बोला है कि बेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस. तो बेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस मींस थर्ड वर्टेक्स मे बी अबव द एक्स एक्सिस और मे बी बिलो द एक्स एक्सिस. So the coordinates of this point are 0, minus root 3a. तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द स्कूल एग्जाम. Similarly, if we consider another part, base lies on y-axis and procedure is same. This is 2a, this is 2a, a, ये भी हमने निकाला root 3 है. So what are the coordinates of this point? Root 3a, 0. Coordinates of this point is 0, a. Coordinates of this point is 0, minus a. Similarly, we can consider another triangle. So the coordinates are minus root 3a, 0.
In this way you can find all the vertices of the triangle. So these two questions are very important question. तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंटरनल सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, फिर आफ्टर दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, distance between 2 points when the line is parallel to y-axis. After that, how to find the coordinates of the triangle. Now, let's start with the most important topic of this chapter, that is slope. Slope is a hero of the movie Straight Line. Slope is the hero of the movie Straight Line. So first of all you must clear the term slope. Slope वैसे हम समझते हैं incline slope. एक होता है mild slope, mild M-I-L-D, mild slope. एक होता है steep slope. तो जैसे थोड़ा सा slope, एक ज्यादा slope, इस तरह से. तो slope, there are different methods by which we can find the slope of a line. Suppose that there is a line having the points x1, y1 and x2, y2. The symbol of the slope is m. The symbol of the slope is small m. So slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula of the slope whenever 2 points on the line are given. This is the first concept. Second one, suppose that there is a line making an angle theta with positive x-axis in the anti-clockwise direction. Suppose that a line makes an angle theta with positive x-axis and in the anti-clockwise direction, then tan of this, जो आपने 10th क्लास में ट्रिगो पढ़ी थी, sin cos tan, इस एंगल का अगर हम tan निकालेंगे उससे हमें स्लोप की वैल्यू मिलती है. तो इसकी डेफिनेशन tangent, once again I am repeating tangent. This tangent is not from the circle. This tangent is from trigo. Tangent of an angle which a given line makes with positive x-axis and in the anti-clockwise direction called slope, that is tan theta. So the second formula of slope is tan theta. So the first formula of slope is this, another formula of slope is this. Now see, if theta is acute, acute means the angle which lies in the first quadrant, and in the first quadrant all the trigonometric functions are positive, so slope is positive. The second part, if theta is obtuse, m is negative. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, under what condition the slope of a line is negative? When the line is inclined at an obtuse angle. If theta is 0, m is tan 0. Tan 0 is 0. थीटा कब 0 होगा? जब ये लाइन पूरी की पूरी x एक्सिस से कोइंसाइड करेगी. That means slope of x axis. So slope of x-axis is always 0. Now the next part, if theta is 90 degree,
if theta is 90 degree like this, ये theta यहाँ आ जाएगा, तो tan 90 is not defined. That means slope of y-axis. Slope of y-axis. When theta is acute, slope is positive. When theta is obtuse, slope is negative. When theta is 0, slope is 0. When theta is 90 degree, slope is not defined. उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, if two lines are parallel. If two lines are parallel like this, so both the angles are same because they are the corresponding angles. They are the corresponding angle. So if two lines are parallel, then their slopes are also equal. Slopes are also equal. That is m1 is equal to m2. m1 is equal to m2. Now we are going to discuss some other concepts related with slopes. Now see, if 3 points are collinear. 3 points are collinear. Here AB parallel BC parallel AC. Now this line has 3 parts. One part is AB, another part is BC, and the third part is AC. And all these 3 lines are parallel lines. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर पैरेलल लाइंस तो कभी मिलती नहीं है. ऐसा नहीं है ये डेफिनेशन. पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. दे कैन मीट ईच अदर, ये मीट कर सकती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. सो AP is parallel to BC, parallel to AC. That means slope of AB is equal to slope of BC is equal to slope of AC. तो कैसे निकालेंगे इनके स्लोप? By using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आ जाता है? इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 a, इसके कोऑर्डिनेट है 7 6. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? तो आप कोई भी दो स्लोप्स यूज करिए और उनको इक्वेट कर दें. पहले इसका स्लोप निकाल लें, जैसे स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप ऑफ BC 6 minus a upon 7 minus 5, a minus 3 upon 3, 6 minus a upon 2. Simplify this, you will get the value of a. So with the help of the slope, we can simplify the questions based on 3 collinear points. एक आपको इसके अंदर क्वेश्चन आएगा, verify the Pythagoras, check whether the triangle is right triangle or not. 10th क्लास में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पर आपने इसे पाइथागोरस से वेरीफाई किया था. 11th में आपको ऐसे भी आ सकता है, नीचे लिखा हुआ होगा check whether the triangle is right triangle or not without using the Pythagoras theorem. उसके लिए अब हमें एक पॉइंट देखना है. देखिए, if this is also a very important point, if two lines are perpendicular, then product of their slopes is -1. That is m1 into m2 is -1. Why? Suppose that this is any line. This is any line makes an angle theta. Suppose that this is another line which is perpendicular to this. What is the slope of this line? Slope of this line is tan of theta. जिस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना होता है, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल मालूम होना चाहिए. सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस लाइन विद एक्स एक्सिस? दिस इज 90 प्लस थीटा. So what is the slope of this line? Tan of
90 plus theta. And in the quadrant system, we have already discussed tan 90 minus theta is minus cot of theta. Let this is m1, this is m2. So m1 into m2 is tan theta into minus cot theta, which is equal to minus 1. So in this question, first of all find the slope of AB, then find the slope of BC, then find the slope of AC. First of all find the slopes of all the three lines. After that multiply this by this. If you will get 1, it means this line is perpendicular to this line. If you will not get 1, then multiply this with this. If you will get 1, it means AB is perpendicular to AC. So 3 अटेम्प्ट्स आपको ट्राई करने पड़ेंगे. पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, या वर्बली सामने जो भी आपके पास लिखा है उसको देख लें, किसका प्रोडक्ट करने से -1 आता है उसी को शो कर दें और उसके बाद आप लिख दें these two lines are perpendicular to each other, therefore the triangle is right triangle. And the last topic is how to prove the quadrilateral is a parallelogram without using the distance formula. 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से प्रूव किया था कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है. In parallelogram, these two sides are equal, so slope of AB must be equal to the slope of BC. अब एक चीज और है, आप AB का स्लोप निकालें या BA का निकालें, it doesn't matter, both will give you the same answer. So first of all find the slope of AB and slope of BC. If these two lines, if these two slopes are same, we can say that AB is parallel to BC. Now find the slope of these two lines, and if slope of AD is equal to slope of BC, then AD is parallel to BC. If the opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is a parallelogram. तो देखिए ये आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है. सेकंड पार्ट में हम लेकर के आएंगे व्हाट आर द डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर सो मेनी कंडीशंस, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो. तो उम्मीद है आप सबको ये काफी समझ आया होगा. मैंने डीपली आपको समझाने की कोशिश की है. फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा. और आपसे रिक्वेस्ट है हमारी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और जो ऊपर घंटी का निशान है उसको प्रेस करिए जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए. साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं तो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू.